ریاستی کابینہ نے بنگلورو کے پیریفیرل رنگ روڈ کا نام تبدیل کرके बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर रखने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिवकुमार ने बताया कि 117 किलोमीटर की ये सड़क जो टुमकुर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है, इसके लिए नोटिफिकेशन पहले जारी किए गए थे, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ था। शिवकुमार ने कहा कि पिछली हुकूमतें इस मंसूबे को छोड़ना चाहती थीं, लेकिन अब एक मुतबादिल सड़क की जरूरत है और कोई सड़क मंसूख नहीं की जाएगी। इन्होंने जमीन के मालकान के लिए 4 किस्म के मुआवज़े के ऑप्शंस की तफसील भी बताई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सड़क की चौड़ाई 100 मीटर होगी, लेकिन असल में ये सिर्फ 65 मीटर चौड़ी होगी और बाकी 35 मीटर जमीन मालकान को वापस दी जाएगी ताकि वो इसे कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। शिवकुमार ने कहा कि 35% सड़क की जमीन मालकान को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी और अगर किसी को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जमीन चाहिए तो 40% दी जाएगी। आधा एकड़ जमीन तक कैश कंपनसेशन का भी इंतजाम होगा। इन्होंने मजीद बताया कि जो लोग जमीन के बजाय फ्लोर एरिया रेशो चाहते हैं, इन्हें भी फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी एफआर जमीन के साथ मुल्हका जगह इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के जरिए भी कंपनसेशन दिया जाएगा। शिवकुमार ने कहा कि दुगना टीडीआर दिया जा सकता है या मुतबादिल बीडीए लैंड दी जाएगी और जो लोग रकम नहीं लेना चाहते, इनकी जमीन हासिल करके रकम अदालत में जमा कर दी जाएगी। इस मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 27,000 करोड़ रुपीस है और हुकूमत इसके लिए लोन ले सकती है। नई कंपनसेशन पॉलिसी के बाद मंसूबे की लागत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपीस कम हो सकती है। शुमाली शहर में इस मंसूबे के लिए तकरीबन 1800 एकड़ जमीन दरकार होगी। Karnataka has taken a very big decision. The government has taken a very big decision. I am announcing we had earlier government had notified 117 kilometers of road in the northern part of southern part called the Peripheral Ring Road. We have renamed that road as the Bengaluru Business Corridor. It lies within the city of Bangalore. One side from, I think you may notice, it will be in the Kogilu, where after the Yelanka, that road is coming there, in the middle of that. And it is in the electronic city, running between inside the electronic city. Then it touches the Mysore. Then it will go to the BIC, that where the exhibition is there. It is about 67 kilometers. 73 kilometers of the northern and the rest is on the southern part. So we have decided we will stick on to the Bengaluru-Mysore road size. It will be 65, we have notified for 100 meters. The rest 35 meters we have decided to give back to the farmers. It will be a commercial road, commercial viability. Many of the farmers requested us that you please give us, that will be very happy. There was a proposal by various people that to auction the property. We don't want to auction the property. To lessen the financial burden of the government and the Bangalore Development Authority, we decided to make it give option to the farmers. Either they can take cash compensation of the present market as per the new act, number one. Number two, 2 times in the city, 3 times in the rural sector of the present guidance value, whichever is there. Number 2, they can opt for even the TDR. We are going to give a urban TDR. Number 3, we are going to give FIR. 4 options is been given. One is cash. The second is TDR. Third is FIR. 4 is 35% of the commercial property. If anyone want to opt for a residential in any of the BDA levels, the existing new levels, we are going to give them the residential area. So this we wanted to complete within the next 2 years. So the farmers are very much eagerly waiting for this decision. So I think many of farmers will come forward and will grow. If anyone doesn't want it, we will see that we will deposit the cash amount to them. And we will go for a regular acquisition and we will deposit the cash and we will go ahead with the project. At any point of time, I will not go back on denotifying this property, this land. This is great because the Bangalore is choking. We want traffic to come down.
I want all the people of Bangalore. We know about 1,900 families will be affected, but still they will be achieving more than what they expected. The government is offering to them. This is one of the biggest decisions in the history of Bangalore Development Authority and the government of Karnataka.